अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब ठीक और बिल्कुल खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी एचटीएमएल पे। एंड मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी एचटीएमएल के हवाले से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप सच में एचटीएमएल सीखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देखें, उनको फॉलो करें एंड प्रैक्टिस करें। देन यू कैन बी लर्न द बेस्ट एचटीएमएल फ्रॉम आवर वीडियोज़। एंड फ्रॉम दिस वीडियो we are going to cover or tell you about the simple page breakdown. Use these tags are the used in the example. कुछ हम आपको टैग्स बताएंगे एंड उनकी मीनिंग्स बताएंगे। डॉक टाइप जो होता है उसकी जो मीनिंग है डिफाइंस द एचटीएमएल वर्जन। डॉक टाइप जो होता है एचटीएमएल का वर्जन डिफाइन करता है, बताता है। यूज इन द डॉक्यूमेंट, इन दिस केस it is HTML5. See the doc type for the more information. HTML जो होता है opens the tag, no markup should come after the closing tab. ठीक है। The language attribute declares the primary language of the page using the ISO language codes. Example for English. See the content language topic for more information. Opens the head section which does not appear in the main browser window but mainly contain, ठीक है। हेड जो होता है हमारा information about the HTML document called metadata. It can also contain imports from external style sheets and scripts. That closing tag is head gives the browser some metadata and about the document. That char said attribute declared that character encoding modern HTML document should always be UTF-8 even though it is not a requirement। ठीक है। हेड क्या होता है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कॉल्ड मेटाडेटा। इट कैन स्टाइल शीट एंड स्क्रिप्ट द क्लोजिंग टैब हेड gives the browser some metadata about the document. The chat set attribute declare the character encoding modern HTML document should always use UTF-8 even though it is not a requirement in metadata। टाइटल जो होता है हमारा द टाइटल ऑफ द पेज टेक्स्ट रिटन बिटवीन दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैब टाइटल will be displayed on the tab of the page or in title bar of the browser। उसके बाद हमारा बॉडी टैग जो होता है वो opens the part of the document displayed to user। Example all the visible or the editable content of the page number content, ठीक है, ed एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। H1 जो होती है हमारी हेडिंग वन लेवल वन हेडिंग फॉर द पेज। सी हेडिंग्स फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। पैराग्राफ पी जो हमारा टैग होता है रिप्रेजेंट्स अ कॉमन पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद HTML इज इनहेरिटेड फ्रॉम द एजेंसी DOS3 कैरेक्टर फाइल एक्सटेंशन लिमिट। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और मज़ीद डिस्कस करेंगे HTML के हवाले से। तो करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक जुनैद को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर।